Good morning, students. Welcome in science class. And in last class, we discussed about forest and what are the uses of forest. Now, today we are going to discuss about deforestation. Students, have you heard your parents being nostalgic about past? Means they used to say we would wake up to the sound of birds. Now, can you tell me this is not reality anymore? मीन्स वो हमेशा यही कहते थे, हम हरे भरे पेड़ों के नीचे सो जाया करते थे, सुबह उठते ही बर्ड्स की साउंड सुनते थे, बहुत सारे बर्ड्स आंगन के अंदर बैठे हुए चहचहा रहे होते थे. बट अब ये चीज़ें आपको देखने को बहुत ही कम मिलती हैं, इवन बिल्कुल नहीं मिलती. बिकॉज वी लाइक द टॉल बिल्डिंग्स, वाइड रोड्स, good houses. As our population is increasing, we need more space to construct houses. Due to this, we have to cut down all the trees. Can you tell me what this process is called? When many plants are cut down, this is called deforestation. D means cutting, forestation means trees. Large scale cutting of trees to clear land for human use is called deforestation. Means we are cutting trees for our benefits. What are the causes of deforestation? Let us discuss. Why are we cutting trees? What is the reason behind it? First is we need more land to make houses, industries, and for agriculture also. As you know, the population is increasing, we need more food to live and more houses to live, industries to make our wishes completion. Means we need things more, and that is why we have to install more industries, need wood for construction, and also we need wood for fuel, for burning purposes, need some trees for specific use which they cut without planting more of them. This is the reason the plants number is decreasing, because we are increasingly cutting the trees but we are not planting the same number. We are planting trees but at less extent. That's why this led to the process of deforestation. Now, what are the harmful effects of deforestation? We are cutting trees and this causes very serious reaction. Our action is the cutting trees and we are getting the reaction. These are very serious causes. Let us discuss. Decrease in the level of underground water. The water below the ground, this is called groundwater, the level is decreasing. Loss of habitat for many species. We discussed that many animals live in the jungles, in the forests. When we cut the trees, where they will live? They will not get places, they will not get trees to make their nests. That's why they will lost. And now extinction of species of plants and animals. Obviously सारी स्पीशीज़ जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी. और एनिमल्स को जो फूड चाहिए वो नहीं मिलेगा, उनकी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, दे विल गेट एक्सटिंक्ट. इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. You know, the plants are using carbon dioxide and they are releasing oxygen. Life supporting gas, oxygen they are releasing. And when we will cut the trees, what will happen? The carbon dioxide gas will not be used up and the number of carbon dioxide, amount of carbon dioxide in environment will increase. Shortage of drinking water at many places. As you know, the groundwater level will also decrease and drinking water will also get reduced. Increase in the soil erosion that can cause more frequent floods, desertification and pollution. First is the soil erosion. What is soil erosion? Means removal of top fertile layer of the soil.
As you know, trees and plants have roots, and what is the function of roots? To hold the soil and to allow water to percolate. Means water को पूरे प्लांट पार्ट तक जाना, वो सॉइल एब्जॉर्ब करती है उस वाटर को, अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करके और नीचे ग्राउंड लेवल तक लेकर जाना, अर्थ में लेके जाना. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ रूट्स एज दे पेनिट्रेट डीप इन द ग्राउंड. दैट्स वाई विद द हेल्प ऑफ रूट्स जो वाटर है वो बिल्कुल डीप तक चला जाता है, वाटर टेबल तक चला जाता है. और जब प्लांट्स का नंबर कम होगा तो ऑब्वियसली रूट्स भी कम होंगी, और रूट्स कम होंगी तो जो टॉप लेयर है उसको कौन अपने अंदर जकड़े रखेगा. जैसे ही बहुत तेज़ हवा आएगी, बहुत तेज़ पानी का कहीं से फ्लो आएगा, वाटर फ्लो होगा, तो वो जो टॉप लेयर है वो वहाँ से अपने आप रिमूव हो जाएगी विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वाटर. So, soil erosion is the first cause of the deforestation. No top layer, infertile soil, open land. As you are watching in this picture, the land is totally open because there are no trees, and it will lead to the desert. And this is called desertification. Means जो ऊपर की फर्टाइल लेयर है वो नहीं है, सॉइल जो है अब इतनी न्यूट्रिशियस नहीं रही प्लांट्स के लिए, अच्छी नहीं रही, इसलिए उन प्लांट्स का नंबर भी धीरे धीरे वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे. दिस इज़ द डीसर्टिफिकेशन. नेक्स्ट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग. मीन्स increase in the temperature of earth, heating of the earth. As you know, plants are taking carbon dioxide and releasing oxygen. When the number of plants will be less, what will happen? The amount of carbon dioxide gas will increase in the environment, and it will lead to the warming of the earth. As you know, carbon dioxide gas trap more heat rays of the sun. It traps more heat rays of the sun and led to the warming of earth. See this increasing heat, and the part of earth where it is affected by global warming. Increasing heat is called global warming, and these are the reasons that totally led to the process of deforestation, which are these are the consequences, that pollution will increase, soil erosion, temperature rise means global warming. When there will be global warming, floods will come, ice will melt, glaciers melt, and droughts also. Means totally जो है less trees, no trees, it will lead to the drought. मीन्स सूखा पड़ जाना, फूड की कमी हो जाना, ट्रीज़ की कमी हो जाना. एंड लास्ट वन इज़ द pollution. You know very well, increasing heat, as we study in the global warming, that it led to the increase in the temperature of the earth as because of the increasing amount of the carbon dioxide. When carbon dioxide in nature will increase, it will also lead to the pollution. As usual, the carbon dioxide is not a pollutant. The amount of carbon dioxide in the environment, as you know, is 0.03%. But increased amount of carbon dioxide is as a pollution because it traps more heat rays, and as it traps more heat rays, it will lead to the warming of the earth. And because of the global warming, because of the warming of earth, ice melts, glacier melts, and floods will come. This was all about deforestation, its consequences, and how can we conserve forests. First is the design certain areas as forest reserves. Means we have to government should allow some areas as they will called as forest reserves. Means there is no
human, no humans are allowed to go there. Controlled cutting of trees. Trees should be cut, but it should be at limited extent. Reforestation means plantation of the trees, and education campaign to sensitize people of importance of forest, as we do. बहुत सारी कैंपेन है हमारे स्कूल की तरफ से, सोसाइटीज़ के अंदर हम प्लांटेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं कि हमें बहुत सारे ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए. हमारे स्टूडेंट्स स्कूल में बहुत सारे पोस्टर्स बनाना, पोस्टर्स पेस्ट करना, लोगों को समझाना, सोसाइटीज़ में पीपल को समझाना कि ट्रीज़ हमारे लिए क्यों यूज़फुल हैं, एंड दे बिकम अवेयर अबाउट दिस. व्हाट कैन आई डू पर्सनली टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. आप क्या कर सकते हैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए? अवॉइड डिस्ट्रॉइंग ट्रीज अननेसेसरली. बिना यूज़ के ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए, बिना ज़रूरत के नहीं कट करना चाहिए. अगर आप कट करते भी हैं तो आपको ट्रीज़ ग्रो भी करने चाहिए. रिसाइकिल मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट, लाइक पेपर. जो भी मटेरियल आप रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, you should do that. Do not hunt wildlife excessively. Hunting should be prohibited, means आपको कभी भी वाइल्ड एनिमल्स की, वाइल्ड लाइफ की अपने शौक के लिए हंटिंग नहीं करनी चाहिए. गेट इन्वॉल्व इन एनवायरमेंटल इश्यूज़ थ्रू वर्ड एंड एक्शन. आपको एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए. आज क्या चल रहा है हमारे एनवायरमेंट में, हम कैसे एनवायरनमेंट को, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे साफ़ रख सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, और किस टाइप से हमें अपने सोसाइटी मेंबर्स को अवेयर करना चाहिए. सो दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड दैट हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. एंड डोंट हंट वाइल्ड लाइफ एक्सेसिवली, ऑब्वियसली. सेम, गेट इन्वॉल्व इन द एनवायरमेंटल इश्यूज थ्रू वर्ड एंड द एक्शन. Thank you for today. And you have to, the homework is that you have to read this chapter and you have to underline the important points.